So in the last lecture, after our discussion on inductive effect and after the discussing about the applications of inductive effect, we have started with resonance. In the resonance, we have started with the structure of ozone. There can be two possible structures of ozone, where in one structure you are having coordinate bond between 2 and 3, and in the other structure you are having the coordinate bond between 1 and 2. If I am taking any of the two structures, suppose if I am taking structure A and if I am analyzing the bond parameters, the bond order between 1 and 2 oxygens is 2 and bond order between 2 and 3 is 1. More is the bond order, less will be the bond length. Hence the bond length between 1 and 2, L1, we have written that as L1 less than L2, and more is the bond order, more will be the bond energy. So E1 has to be greater than E2. ऐसा कुछ parameters लिखा हमने, and हमने और एक statement mark किया. If I am taking the structure B, all these parameters will be exactly reversed. So whenever you are observing the structure of ozone, you may get you should get the parameters as 2, one of the bond length lesser than another bond length, and one of the bond energy greater than the other bond energy. ऐसा कुछ expected है. But whenever you are taking the actual structure of ozone, and if you are identifying the bond orders, the bond order is coming to be of the order 1.5, and the bond length between any of the two oxygens is also coming to be same. L1 equal to L2 Ra, and the bond energy is also coming to be same, E1 equals to E2. This can be explained if and only if I take the average of the structures A and B. If I take the average of structures A and B, I can get the bond order between 1 and 2 as 1.5, and the bond order between 2 and 3 as also 1.5. Right? And the individual oxygens के ऊपर वो जो charges क्या होना चाहिए? इस oxygen के ऊपर minus half आ रहा है, इस oxygen के ऊपर minus half आ रहा है. So first we need to understand why is this resonance happening. If you take structure A and structure B, in structure A, the double bond is present, or these particular electrons are concentrated between oxygens 1 and 2. And the negative charge is concentrated on oxygen 3. In case of structure B, the double bond is present between 2 and 3, or these electrons, the pi bonded electrons are concentrated between 2 and 3, and the negative charge is concentrated only on oxygen 1. If I'm taking structure C, the negative charge is distributed on oxygens 1 and 3, and the pi bond is also distributed between 1 and 2 and 2 and 3. Whenever you are having distribution of charge, ऐसा सोचो, negative charge is nothing but खुद का electron नहीं है, दूसरे का electron है. Okay, so the negative charge is like some burden. In this case, oxygen 3 itself is controlling that negative charge. In this case, oxygen 1 alone is controlling that negative charge. In this case, oxygens 1 and 3, both of them are distributing that negative charge. Okay, so in this case, load जो है, the load got shared. In this case, the load is entirely present on oxygen 3, or the load is entirely present on oxygen 1. Whenever there is load sharing, always the system will be having more and more stability. Okay. अभी ये जो particular negative charge is controlled by this nuclei as well as this nuclei. It will be a better system, right? Clear है? In the same way, ये जो pi electrons है are concentrated between 1 and 2. So only the nuclei 1 and 2 can influence these pi electrons. In this case, the pi electrons are concentrated between 2 and 3. Only the nuclei of 2 and 3 can control these pi electrons. But इस case में क्या हुआ? The pi electrons are distributed. All the 3 nuclei are able to have their control on the pi electrons. जितना ज़्यादा nuclei control करेंगे electrons को, उतना ज़्यादा stability होगा. Again, can I say that? Okay. So what is the reason for resonance? Just to attain stability. How is stability attained? By delocalization of the charge. In structures A and B, we say that the charge is localized on one particular atom, either 3 or either on 1. In structure C, the charge got delocalized. It is present on 3 as well as 1. Whenever there is delocalization of charge, always there will be attainment of stability. Okay? Is that clear? अभी एक बार और एक बात. इस केस में जो भी charges आ रहे हैं ऑक्सीजन 1 और 3 के ऊपर, are they significant amount of charges or are they partial charges? Significant, right? Minus half and minus half. They are not partial. Okay. So
ये जो resonance effect है, is this a strong effect or a weak effect? Strong effect. It has to be a strong effect, right? Inductive effect हमने ऐसा कुछ discussion किया. Inductive effect is a weak effect. Why is the inductive effect weak effect? Because the charges which are appearing on the atoms are partial charges. Okay. And वो partial charges किस वजह से आया? Because of shifting of electrons through strong sigma bonds. यहाँ पे जो charges आ रहे हैं, these charges are not partial charges. They are some significant amount of charges. And in this case, the electrons are not just shifted; they got transferred. Can I say that? यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, आधा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? ऑक्सीजन 1 के ऊपर ट्रांसफर हो गया. So the electrons are not just shifted; they got transferred. Whenever you are having transferring of electrons, the amount of charge will be significant. Is that clear? So resonance जो है, first of all, it is a strong effect. Is this effect a temporary effect or a permanent effect? This is also a permanent effect because the charges are permanent on the oxygen. No matter what structure, what molecule you take of ozone, always you will be having on the oxygens, these two oxygens, minus of and minus of charge. Those are permanent effect. Okay, this is those are permanent charges and the effect is a permanent effect. Clear? यहाँ पे देखो और एक बार. In order to form structure B from A, what I can do is, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाओ. ओके, नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाओ. ड्यूरिंग द प्रोसेस शिफ्ट वन ऑफ द बॉन्ड onto oxygen 1. A pi bond is nothing but 2 electrons. Whenever I am shifting those 2 electrons onto 1, you will be having the negative charge. Negative charge क्या मतलब क्या होता है? You will be having 2 electrons inside that. One electron is of this oxygen itself and the other electron is of this particular oxygen. Okay, दूसरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे दिखाते हैं. नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन खुद का ही होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम का होगा. इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज मतलब यू आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. आई एम यूजिंग दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए बॉन्ड. आई एम यूजिंग दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए बॉन्ड. सो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया एंड ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसा बनाया. सो आई कैन convert one resonating structure into another resonating structure by this transfer of electrons. देखो यहाँ पे electrons transfer हो रहे हैं. ये वाला यहाँ पे pi bond बनाया. This pi bond will be shifting onto 3 to make negative charge. In this case, the transfer of electrons is happening through these pi bonds. Pi bonds are weak, so I can easily break those bonds and I can transfer electrons. Hence, this particular effect is also called as strong effect. Okay, is also a strong effect because I am transferring electrons through weak pi bonds. In case of inductive effect, I have shifted the electrons through strong sigma bonds. इसलिए वो shift उतना ज़्यादा नहीं हो पाया. इसलिए वो जो charges है partial आया वहाँ पे. यहाँ पे I'm transferring the electrons and the transferring is happening through weak pi bonds. Hence, the effect is a strong effect. I hope this is clear. Okay. So why is resonance happening? To achieve stability. In order to attain stability. And how is stability is attained? By delocalization of charge. Okay. The charge got delocalized on 2 different oxygen atoms. Hence, you are attaining stability. Let us mark some rules. उससे पहले कुछ points mark कर लेते हैं. जो delocalization है in structures A and B, the negative charge is local to just one oxygen atom. The negative charge is local to just one oxygen atom. Whereas in structure C,
whereas in structure C, negative charge is delocalized over two oxygen atoms. Why is the charge getting delocalized? Why is the charge getting delocalized? The reason for delocalization is to attain stability by spreading charge. Okay, any doubt? ठीक है. Next point. Delocalization is possible. Delocalization is possible due to presence of delocalization is possible due to presence of weak pi bonds. In inductive effect, electrons are only shifted or displaced, whereas in resonance, electrons are transferred. Because of this, I can say resonance is a stronger effect when compared to inductive effect. Okay. Therefore, the effect of resonance is strong. Is this clear? Okay. अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ए को स्ट्रक्चर बी पे कन्वर्ट किया और स्ट्रक्चर बी को स्ट्रक्चर ए पे कन्वर्ट किया. So you can form one resonating structure from the another resonating structure by showing some changes. Okay. There are certain rules to show those changes. We will be following those rules and you will be converting one resonating structure to another resonating structure. So we will mark those rules for showing the resonating structures. Or rules to show delocalization. You can always convert one resonating form to another resonating form by doing some changes. So A or B structures में हमने changes क्या किया? The negative charge on oxygen 3 formed a pi bond between oxygen 2 and 3, and the pi bond between 1 and 2 formed as a negative charge on oxygen 1. Whenever you are showing transfer of electrons, we will always show the electrons or the transfer of electrons from higher density to lower density. Negative charge is nothing but higher density, na? So electrons are migrating from higher density to lower density. So negative charge जो है यहाँ पे pi bond बनाया, ये जो pi bond जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर negative charge जैसे बना. Is that clear? Okay. एक मिनट सब लोग ऑब्जर्व करना. इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन 2 के ऊपर tell me the number of lone pairs that are left. Oxygen 2 के ऊपर tell me the number of lone pairs that are left. Number of lone pairs that are left on oxygen 2. One lone pair. One lone pair. क्योंकि एक lone pair जो है, that lone pair is given in coordinate covalent bond, right?
है कि नहीं? ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ वन लोन पेयर. ऑक्सीजन का outermost इलेक्ट्रॉन्स कितने होता है? 6 electrons. Out of those 6 electrons, you are having 3 electrons participating in bonding. Okay, 1 2 3 3 electrons मतलब 3 bonds मिला, so 6 electrons हुआ plus 2 electrons, total of 8 electrons. Octet complete है इस ऑक्सीजन का, सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट ही है. देखो, if in case if you are forming this as a pi bond, if you are not breaking this pi bond, तब क्या होगा? बीच वाला ऑक्सीजन के ऊपर you will be forming 4 bonds like this with a positive charge on this. ऑक्सीजन का outermost electrons कितने हैं? ऑक्सीजन का outermost electrons 6. What is one by positive? -1. Loss of Nothing. electron. Loss of electrons -1. इसका मतलब 5 electrons है. अब ये 5 electrons में से आप लोग 4 bonds बनाया. ओके, 4 bonds मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 electrons -4 + 1, टोटल 9 electrons आ रहे हैं ना. ऑक्सीजन के outermost शेल में 9 electrons रह ही नहीं पाएगा. ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है गलत होगा. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, whenever you are making the negative charge into a pi bond, you need to break this particular pi bond. You need to break this pi bond and you need to take that pi bond onto the 1 and you need to convert that into negative charge. You should not represent any structure like this. क्योंकि ये स्ट्रक्चर गलत होगा. इसलिए गलत होगा बिकॉज ऑक्सीजन के outermost शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए हो समझ में आया आपको? ऑक्सीजन के outermost इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मल outermost इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6. पॉजिटिव चार्ज मतलब you need to remove one electron, so अभी you are having 5 electrons. Oxygen is forming 4 bonds. 4 bonds मतलब -4 electrons, you are left with 1 electron. Okay, if it is forming 4 bonds, you are having 4 more electrons, so you are having total of 8 electrons. That 8 + 1, total of 9 electrons are present in the outermost shell in this structure. 9 electrons can never exist in the outermost shell of oxygen. Reason क्या है? ऑक्सीजन का outermost shell है second shell. सेकेंड शेल में आपको 2s रहेगा और 2p रहेगा. 2s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स, p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6, so maximum of 8 electrons are possible in the outermost shell of oxygen. So this particular structure is wrong. Is that clear? Whenever you are forming a pi bond with that particular negative charge, you need to break this pi bond and you need to form that as negative charge on oxygen 1. I hope this is clear. आपको कुछ रूल्स लिखता हूं यहाँ पे, आपको समझ में आएगा. रूल नंबर 1, pi electrons are always transferred to an atom. Pi electrons are always transferred to an atom. Rule number 2, electrons on an atom either in the form of a negative charge or as a lone pair are always transferred to make a pi bond. Last point, electrons flow from higher density to lower density. Electrons flow from higher density to lower density. देखो, again, I'm taking the same example. Oxygen
oxygen, oxygen. Okay. What is the first point? Pi electrons are always transferred to an atom. These are nothing but pi electrons. Whenever I am transferring them, always those particular pi electrons must be transferred to an atom. Electrons on an atom, either in the form of a negative charge or as a lone pair, are always transferred to make a pi bond. So ये जो negative charges है ना, so they will be transferred to make a pi bond. The electrons will always flow from higher density to lower density. So यहाँ पे मुझे start कहाँ से करना चाहिए? ये जो particular negative charge है, this is of higher density, so it will be transferring between these two to make a pi bond, and the pi bond will be transferred onto an atom to form a negative charge. So this will result in the formation of इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, and you are having double bond O. Clear? और एक एग्जांपल लेते हैं. Let us take another example. Let us try to draw the structure of CO3 2 minus. CO3 2 minus is nothing but carbonate ion. I hope everyone can draw the structure of carbonate. What is the central atom? Carbon. You are having three oxygens, oxygen, oxygen, oxygen. Whenever you have negative charge, you will always place the negative charge on the more electronegative element according to Lewis rules. So इसमें दो नेगेटिव चार्जेस है, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर. ऑक्सीजन का outermost electrons 6 है. After having a negative charge, its outermost electrons have become 7 in order to have octet completion. और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? One more electron, so it will be forming only one bond. Similarly, ये जो particular oxygen है, it will also form only one bond. कार्बन का outermost electrons कितने हैं? कार्बन के 4. If you have 4 outermost electrons, और कितना चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए? 4. इसका मतलब कितना बॉन्ड्स बनाना चाहिए उसे? 4 बॉन्ड्स. ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स इन 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिया. तो बचा हुआ 2 बॉन्ड्स किसके साथ बनेगा? लास्ट ऑक्सीजन के साथ, इन ऑक्सीजन के साथ. और इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट. हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? The electrons will always transfer from higher density to lower density. So a negative charge is considered as higher density. So a negative charge will always be formed as a bond between 2 atoms. A pi bond will always be transferred onto an atom. So that will lead to this particular resonating structure. See, in दोनों के बीच में double bond O minus, and इसके ऊपर O minus. Any doubt? Next structure में what you will do is, अगर in case if you are doing, ये जो negative charge है यहाँ पे pi bond मिला, and ये जो particular pi bond है यहाँ पे negative charge मिल गया, you will get back this structure. You won't be getting any new structure. ये जो negative charge है उसको pi bond जैसा बना दिया, and ये जो pi bond है उसको negative charge जैसा बनाया. In that case, you won't be getting a new structure. So इसलिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड बनाओ, ये पाई बॉन्ड को इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे बनाओ, which will lead to C bond इसके ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड O. Any doubt? Okay, you are getting 3 resonating structures in this case. एक बार ऑब्जर्व करते हैं 3 resonating structures कैसे बना. In this structure, you are having the double bond between these 2 atoms. Similarly, you can also have the double bond between these 2 atoms and these 2 atoms. Accordingly, you will be getting 2 more structures. यहाँ पे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया ना, नेगेटिव, इन बॉन्ड बना दिया मैंने नेगेटिव. ओके,
So in this case, you are having double bond between this carbon and this oxygen. What is happening through these structures? I am distributing these negative charges on different oxygen atoms, as well as I am distributing this pi bond between different oxygen atoms, right? है कि नहीं? इस केस में दो नेगेटिव चार्जेस इन दो ऑक्सीजन के ऊपर है, इस केस में टू नेगेटिव चार्जेस इनके बीच में है, इस केस में दो नेगेटिव चार्जेस इन दो ऑक्सीजन के बीच में है. So during resonance or by drawing different resonating structures, I am distributing the charge on different oxygen atoms. So these are the resonating structures. Can you tell me the resonance hybrid? हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? Can anyone tell me? 2/3. 2/3. In total, you are having two negative charges, and those two negative charges are distributed among three oxygen atoms. So हर किसी को कितना नेगेटिव चार्ज मिलेगा? -2/3, -2/3, -2/3. Any doubt? Okay. Everyone observe. इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 1 बॉन्ड. इस स्ट्रक्चर में सेम ऑक्सीजन सेम कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 2 bonds. 2 बॉन्ड्स. इस स्ट्रक्चर में सेम ऑक्सीजन सेम कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 1 bond. एक ही बॉन्ड है. सो टोटल बॉन्ड्स कितना हुआ? 1 + 2 + 1 4. टोटल स्ट्रक्चर्स कितना है? 3. So what will be the average? 4/3. 4/3. What is 1/4/3? That 4/3 is nothing but 1 + 1/3. You are having one complete bond. Observe karo everyone. Whenever you are distributing the bonds, you are only distributing the pi bond. ये जो pi bond है अभी यहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में. इस स्ट्रक्चर में वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस स्ट्रक्चर में वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ. You are not at all affecting the sigma bonds. Sigma bonds तो उनके places में ही है. The pi bond is getting distributed. Okay. ऐसा भी देख सकते हैं आप लोग. आपके पास एक pi bond है, कितने के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा? 1 pi bond is distributed among 3, right? So हर किसी को कितना आएगा? 1/3. 1/3. Okay, 1/3. 1 + 1/3 का मतलब क्या है? You are having one complete sigma bond and you are having 1/3 pi bond contribution. Okay. So इसको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? You are having one complete bond, one complete bond, one complete bond, and you are having 1/3 pi bond, 1/3 pi bond, 1/3 pi bond. What is the bond order here? Bond order is equals to 4/3. So in resonance, only the pi bond will be distributed, but sigma bonds won't be affected. Sigma bonds are strong bonds, na? Pi bonds being weak bonds, they are able to break and they are able to get distributed. Is that clear? Sir, pi bond और sigma bond कैसा है? Pi bond का? Sir, 1 + 1/3 में pi और sigma bond. 1 + 1/3 मतलब ये total bond order 4/3 में ये जो 1 है, that 1 is because of sigma bond, and ये जो 1/3 जो है, it is because of pi bond. The first bond formed is sigma bond. Further उसके बाद जो भी bonds होता है वो pi bonds है. So 1 + 1/3, 4/3 को ऐसा split किया मैंने 1 + 1/3. ऐसा क्यों किया? Because सब में वो एक bond तो है ही है, ये कभी किसी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है? जो pi bond चेंज हो रहा है. Okay, only the pi bond is getting distributed. In resonance, the pi bond gets distributed. Any doubt? I will give you a molecule. Try to draw all possible resonating structures as well as the resonance hybrid. Example, ClO4 minus. ClO4 minus. 1 minute. Okay, हो गया. ठीक है.
Sir, bond order will be 7/4. Sir, charge -1/4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 7/4. 1.75. ओके, देखते हैं. स्ट्रक्चर आप लोग ने यही मार्क किया. Cl, you are having 4 oxygens. One of the oxygen will be having negative charge. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको एक बॉन्ड का ही जरूरत है. एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. क्लोरीन का outermost इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. See, all of its 7 electrons are participating in bonding. इसलिए 7 bonds बनाया. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो इस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. वैसा ही आप लोग 3 और स्ट्रक्चर्स बना सकते हो जिनमें एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा. राइट. सो आप, आई होप आप लोग ने वही बनाया होगा. एंड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इन जनरल वी यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल, दिस सिंबल. सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. कार्बन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. Any doubt? Anyone? How to show the movement of charges? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से यहाँ पे आया and this pi bond is breaking onto this particular oxygen to convert into negative charge. इस केस में इस स्ट्रक्चर बनाना है ना हमको. So ये यहाँ से यहाँ पे आया and this pi bond is breaking onto this oxygen. ये स्ट्रक्चर बनाना है हमको. So ये this is coming onto this and ये जो particular pi bond है this is breaking onto that oxygen to convert into negative charge. That is how you show movement of electrons. Any doubt? Okay. How to draw the resonance hybrid? Chlorine है ना? Chlorine, chlorine, chlorine. How to draw resonance hybrid? You have chlorine atom. और जो sigma bond है, the sigma bond is not shifted, so you will be having one sigma bond with oxygen. You are having 3 pi bonds. Those 3 pi bonds are distributed among 4 oxygen atoms. So each will be having 3/4 pi bond. So the bond order becomes 7/4. 3/4. 1 plus 3/4 equals to 7/4. What will be the charge on individual oxygen atoms? -1/4. -1/4. -1/4. You are having one negative charge distributed among 4 oxygen atoms. -1/4, -1/4, -1/4, and -1/4. Good. ठीक है. और एक क्वेश्चन करना है क्या? Try to draw resonating structures, all resonating structures for SO4 2- sulfate. All resonating structures for SO4 2-. Tell me number of structures that are possible. And ये जो चार्ज है, एक मिनट, ये जो चार्ज आप लोग मार्क कर रहे हैं ना,
That charge is also called as formal charge. They will ask what is the formal charge on each oxygen atom. So you need to mark it as -1/4. In this case, without doing or without drawing the structures, can you tell me what will be the formal charge on each oxygen atom? The 1/2, -1/2. -1/2, we are having two negative charges that will be distributed on 4 oxygen atoms. So each oxygen atom will be getting -2/4, which is -1/2. Right. For the resonating structures. Sir, 6 structures will be possible. Absolutely right. 6 structures are possible. 4/3. क्या? अच्छा, sir, bond order 3/2. Bond order 3/2 वो भी सही है. Six structures possible होगा. Sulfur, we are having 4 oxygens. In the oxygens के ऊपर I am marking the negative charge. So the one which has negative charge will be forming only one bond. The other oxygen will be forming 2 bonds. So इस structure में इन दोनों के ऊपर negative charge रखा. Make another structure. You can have the negative charges on these 2 oxygens, or you can have the negative charges on these 2 oxygens. ये दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर. Any doubt? यही होंगे. Okay. How to show the movement of electrons? यहाँ पे आपको ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसा ब्रेक हुआ. इन दिस केस ये वाला इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना एंड ये इसके ऊपर ब्रेक हुआ. एनी डाउट? नेक्स्ट वाला बनने के लिए ऑब्जर्व करो. इससे क्या बनेगा? इससे ये स्ट्रक्चर बनेगा क्या? इससे ये बनने के लिए ये यहाँ पे आया एंड दिस बॉन्ड हैज ब्रोकन ऑन टू दिस. सो यहाँ से आपको ये मिलेगा. राइट. इधर से आपको
ये मिल रहा है, this structure, from this structure you are getting that structure. So ये pi bond जैसा बन रहा है and ये इसके ऊपर, right? Any doubt? ये जो है इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहे हैं एंड ये इसके ऊपर. I hope that is clear. Okay. And here ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आने से आपको ये वाला आगे का स्ट्रक्चर मिलेगा. Is that clear, everyone? Yes, sir. ठीक है. रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? सल्फर, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन. Each oxygen will be having minus 1/2 charge because we are having in total 2 negative charges and you need to distribute those 2 negative charges on 4 oxygen atoms. So each oxygen will be getting minus 2/4, which is minus 1/2. How many pi bonds do you have? How many pi bonds do you have in a structure? 2 pi bonds. 2 pi bonds. Those 2 pi bonds are distributed among how many oxygen atoms? 4. Again 4. So each will be getting 1/2. So यहाँ पे आपको half pi bond, half pi bond, half pi bond, and half pi bond. So the bond order is 3/2, which is 1 plus 1/2, and the formal charges are minus half. I hope this is clear now. Okay. अभी हमको क्या समझना है? Why is resonance happening? In order to attain stability. How does the molecule attain stability? By delocalization of the charge or by delocalization of the pi bonds. अभी हमको ये समझना है when can resonance happen? Okay, इसका मतलब ये नहीं है जब भी आप लोग कुछ नेगेटिव चार्ज दिखा मॉलिक्यूल के अंदर, you will be randomly distributing that negative charges onto atoms. ये पॉसिबल भी होना चाहिए ना, और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना भी चाहिए. So we need to know in what all systems, or we need to know the condition for the negative charge to distribute onto atoms. Okay, we will be seeing the condition when resonance can happen. Clear? Okay. उसके लिए we say that resonance will happen in all those systems where you have conjugation. Very, very important. Everyone concentrate. Resonance will happen in all those systems where you are having conjugation. Conjugation का मतलब क्या है? Definition लिखते हैं. Resonance occurs in conjugated systems. In conjugated systems. What is meant by conjugated system? It is observed when p orbitals with same symmetry, when p orbitals with same symmetry are located on 3 or more adjacent atoms. Yeah. When can resonance happen? Resonance will happen in all those systems which have conjugation. What is meant by conjugation? Conjugation is observed in molecules where you have symmetric p orbitals on 3 or more adjacent atoms. What is meant by symmetric p orbital? अगर आपके पास एक एटम के ऊपर px है तो उसके बाजू वाला एटम के ऊपर भी px, उसके बाजू वाला एटम पे भी px ही होना चाहिए. You need to have symmetric p orbitals, px, 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 py, 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 pz, pz or pz.
Resonance will happen in all those systems where you have conjugation. What is meant by conjugation? Conjugating system is nothing but any system which has symmetric p orbitals on 3 or more adjacent atoms. Let us take an example and understand this. If I take the example of 1,3 butadiene or buta 1,3 diene, buta 1,3 diene. I hope everyone can draw the structure of 1,3 butadiene. Hey yoga, right? Please tell me the hybridizations of these carbons. Carbon का hybridization बताओ. sp2. Okay, right. sp2 is right answer. How to get the hybridization? Whenever the carbon is having all the bonds are sigma bonds, it will be sp3. If it is having 1 pi bond, it is sp2. If it is having 2 pi bonds, it will be sp. ऐसा बात किया हमने कभी? If all the bonds are sigma bonds, it will be sp3. 1 pi bond sp2, 2 pi bonds sp. अभी इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर आपको कितना pi bonds दिख रहे हैं? एक. So it will be sp2. Okay. Good. Tell me the hybridization of this carbon. sp2 ही आएगा सर. sp2 ही रहेगा. It is also having only 1 pi bond. इस कार्बन को देखो, एक pi bond बना रहे हैं, बाकी सब sigma bonds है. Okay, you are having only 1 pi bond, and this is also sp2. Okay, good. Tell me the hybridization of this carbon. sp2. Okay, good. This carbon. sp2. Maybe sp2. Okay. What is meant by sp2 hybridization? You are having 1 s orbital and 2 p orbitals combining to form sp2 hybrid orbitals. So इसके अंदर मान लेता हूं मैं s, px or py are participating in hybridization. So what is the orbital, pure orbital that is left on this carbon? pz. pz, very good. So you are left with pz orbital on this carbon. ये जो कार्बन है इसके साथ pi bond बना रहे हैं. We know that pi bond is always formed between symmetric orbitals. मतलब if you are having a px orbital, you need to have a px orbital in order to have sideways overlap. Okay. So इसके ऊपर आपके पास pz orbital रहा तो इस कार्बन के ऊपर भी कौन सा ऑर्बिटल रहना पड़ेगा? pi bond. pz. Has to be pz. Very good. ठीक है. अभी ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल्स क्या क्या हो गया बताओ? S, px, py. Very good. This carbon is forming a sigma bond with this carbon. और else ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसका ऑर्बिटल्स किस प्लेन में है? They are in xy plane. What is meant by sigma bond? The bond which is formed because of head-on collision, right? ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस कार्बन से हेड-ऑन कोलिजन हो रहे हैं तो इस कार्बन का ऑर्बिटल्स पे किस प्लेन में होना चाहिए? xy plane, because this carbon is having its orbitals in xy plane. If this carbon is making a sigma bond with this, which is nothing but a head-on collision, this carbon's orbitals must also be present in the same plane. So ये वाला कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर? Tell me the hybridization. sp2 में s, px और py पार्टिसिपेट करेगा. Okay. So कौन सा प्योर ऑर्बिटल बच गया? pz. Any doubt, anyone? Okay. Again, this carbon is making a pi bond with this. If it is making a pi bond with this, pi bond is formed between symmetric orbitals. So इस कार्बन के ऊपर भी कौन सा ऑर्बिटल बचना चाहिए? pz बचना चाहिए. So hybridization में जो भी ऑर्बिटल्स जा रहे हैं, those are again s, px and py. Any doubt? Can you see symmetric pi orbitals? Sorry, symmetric p orbitals present on adjacent carbon atoms? इसके ऊपर भी pz है, इसके ऊपर भी pz है, इसके ऊपर भी pz है, इसके ऊपर भी pz है.
So can I say this particular system as a conjugating system? What is meant by conjugating system, or what is meant by conjugation? If you are having p orbitals with the same symmetry located on 3 or more adjacent atoms, that particular system is called as conjugating systems, and that particular system can have resonance. अभी हमने ये जो particular system है एक conjugating system करके हमने confirm किया. Let us see how resonance happen inside this particular system. देखते हैं. First of all, ये समझ में आपको PZ, इसके ऊपर भी PZ, 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 PZ. All of the atoms are adjacent atoms. Any doubt? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. First I have taken the hybridization. Hybridization के बाद ये कंफर्म किया हमने S, Px और Py पार्टिसिपेट किया तो इसके ऊपर PZ बचना चाहिए. If it is forming a pi bond with this carbon, इसके ऊपर भी PZ ही रहना पड़ेगा तभी तो pi bond होगा. So PZ रह गया तो what will be the hybrid orbitals? S, Px and Py. So these hybrid orbitals are present in XY plane. This carbon is forming a sigma bond with this. A sigma bond is formed because of head-on overlap. If it is having a head-on overlap with this, these carbons orbitals must also present in the same plane. तभी तो head-on overlap हो सकता है. So if they are also present in the same plane, it also has to be S, Px and Py. इसके ऊपर भी PZ बचा. ये इसके साथ pi bond बन रहे हैं. So इसके साथ ऊपर भी PZ ही बचना चाहिए. Any doubt? So now you are having a conjugating system. इसका दूसरे तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ. देखो. You are having carbon, carbon, carbon and carbon. You are having pure p orbital, which is PZ. I'm not showing hydrogens. Okay. You are having an electron in this orbital, and you are having an electron in this orbital, electron in this orbital, and an electron in this orbital. इन दोनों के बीच में pi bond बना, and इन दोनों के बीच में pi bond बना, right? Any confusion? इन दोनों के बीच में pi bond बना, इन दोनों के बीच में pi bond बना. What is the maximum capacity of any orbital? 2 electrons. 2 electrons. अभी होता क्या है? Can I shift an electron which is present in this particular p orbital to this orbital? Can I completely shift the electron, an electron which is present in this orbital to this orbital? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? Both of them are parallel to each other, and the maximum capacity of any orbital is 2. So अभी मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? I am migrating or shifting this particular electron into this particular orbital. उसका ऐसे स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो भी ड्रॉ करते एक बार देखो. कार्बन, 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 कार्बन. यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स वैसा ही है. अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शिफ्ट हो गया. ओके. हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया ना, सो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस पर्टिकुलर कार्बन, उसका ऑर्बिटल के अंदर वैकेंसी आ गया, सो इसके ऊपर यू आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. So इस particular structure का representation है ये. This is the orbital picture of this particular structure. Any doubt? अभी हमने किया क्या है? एक बार देखो. We have seen the rules for resonance. A pi bond will always be converted into a negative charge. So ये इसके ऊपर shift किया मैंने. Whenever I am shifting this pi bond onto this particular carbon,
व्हाट इज हैपनिंग, इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए एक बॉन्ड की नुकसान हो रहा है ना, सो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. A pi bond is nothing but 2 electrons. I am taking both these electrons onto this carbon. और जो 2 electrons है, one of the electron is contributed by this carbon and the other electron is contributed by this carbon. I am taking both of these electrons onto this particular carbon. So इस carbon के ऊपर positive charge आया, इस carbon के ऊपर negative charge आया. Any doubt? Okay. And ये possible किस वजह से हुआ, एक बार आप लोग सोचो. This orbital and this orbital, both of them are parallel. The maximum capacity of any orbital is 2 electrons. ये दोनों के ऊपर, ये दोनों के बीच में अभी ओवरलैप हुआ. अभी उस पर्टिकुलर ओवरलैप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकाल के इसके अंदर रख रहा हूँ. This is one of the resonating structure. Remember, this is not the existing structure. This is the resonating structure or the contributing structure. This is not the real structure. This is the imaginary structure. है कि नहीं? ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है हमने ड्रॉ किया, all these structures are imaginary structures. The actual resonance hybrid is the actual structure or the existing structure, right? Right? So अभी ये जो स्ट्रक्चर्स अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ किया, this is one of the resonating structure or this is an imaginary structure. ये क्यों पॉसिबल हुआ? Why is this possible? Because you are having symmetric orbitals. ऐसा सोचो, ये सब buildings ऐसा सोचो. Some person is jumping from one building to another building. He can jump if and only if all the buildings are parallel. अगर ये जो building parallel नहीं है, वो नीचे कूद गया तो मर जाएगा ना. Okay? You need to have parallel buildings, then only the electrons can jump from one orbital to another orbital. The capacity of any orbital, the maximum capacity of any orbital is 2 electrons. इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने. Any doubt? और क्या कर सकता हूँ, एक बार देखो. I can also do this. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको इसमें शिफ्ट करो. Shift this electron into this orbital. Then what will happen? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा. How to represent the structure? कार्बन 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 कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर से इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. कैन आई डू दैट? ओके. और क्या कर सकता हूं? नाउ दिस इज एम्प्टी, राइट? मेक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन to transfer into this particular orbital, which will lead to the formation of this structure. इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, अभी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है. So what I can do is I can show this structure as, इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना सकता हूं मैं. So I will represent the structure as, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है. How I am forming these structures, एक बार ऑब्जर्व करो. इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसके ऊपर लेके आया, तब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनाया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया. यू आर हैविंग अ डबल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक बार देखो, once again. I am not drawing those orbital pictures. I will be drawing only these structures. Please observe. C double bond C bond C double bond C. What I am doing is I am breaking this particular pi bond and I am shifting onto this carbon. In the process, what is the structure that got formed? C double bond C, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसके ऊपर नेगेटिव आया. In the next structure, what I am doing? I am breaking this pi bond and I am shifting onto this carbon.
which will lead to the formation of C bond C. इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर अभी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या कर रहा हूं, आई एम फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन दीज टू, which will lead to the formation of C bond C, डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑब्जर्व करना एवरीवन, ये जो पाई बॉन्ड है, दिस इज फॉर्मिंग ए, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड बिटवीन दोस टू कार्बन्स। ये जो इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड इट विल शिफ्ट ऑन टू दिस कार्बन। रीजन क्या है, कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, राइट। अभी ये यहाँ पे आप शिफ्ट किया तो देयर इज ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन हियर, सो अगर इफ यू आर नॉट ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर 5 बॉन्ड, दिस कार्बन विल बी मेकिंग 5 बॉन्ड्स। कार्बन कैन नेवर मेक 5 बॉन्ड्स, so whenever you are making this pi bond, you need to break this pi bond and you need to convert this pi bond as charge, so which will lead to the formation of this resonating structure, C positive C, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, C डबल बॉन्ड C। फाइनली क्या होगा, ये फिर से बॉन्ड बनाएगा दोनों के बीच में, and you will get back the original structure, C double bond C, bond C, double bond C. Any doubt? एक बार ऑब्जर्व करना, इन these structures स्टार्टिंग में आपने ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर ब्रेक किया, उल्टा भी कर सकते थे, मतलब ये जो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड है इसके ऊपर ब्रेक कर सकते थे, which will lead to another set of resonating structures. Can I say that? एक बार वो ब्रेक करके देखते हैं। Everyone please observe. Now I am breaking the pi bond on this carbon, which will lead to the formation of C, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड C। अभी इसको इसके ऊपर ब्रेक करो, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। एनी डाउट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करने वाला हूं, I'll be making bond between these two. Whenever you see positive and negative side by side, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ, नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस पाई बॉन्ड मस्ट ब्रेक ऑन टू दिस। रीजन क्या है, कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, सो यू गेट C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव, फाइनली ये शिफ्ट होगा, you will get back the original structure. Any doubt? What is happening is exactly हो क्या रहा है, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप कर रहे हैं। Why are they jumping? Because you are having the orbital as symmetric orbital, उसके पैरेलल में है, and the orbital has in each every orbital has maximum capacity of 2 electrons. So electron जो है इधर से इधर जंप किया, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा ऐसे जंप करते 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 हुए एंडिंग में होता क्या है, all these orbitals are mixing among each other and 3 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर। अभी आपको फाइनल मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइन में you will see something like this. All the orbitals are intermixing among themselves and इसके अंदर you will be having total of 4 electrons इनके अंदर।
the density in different regions may be different. मतलब यहाँ पे ज़्यादा density, यहाँ पे कम density, ऐसा हो सकता है. Okay, the density of electrons in this particular cloud may be different, but all these orbitals are intermixing among themselves. Why are they intermixing among themselves? Because all of them are parallel. As all of them are parallel, they are intermixing among themselves to form a one single cloud. And इस cloud के अंदर you are having total of 4 electrons. Okay, कहाँ पे density ज़्यादा होगा? It depends upon these resonating structures. The resonating structure, which is of greater stability, will be contributing more to the resonance hybrid. इससे पहले हम जो भी resonating structures के बारे में बात किया, all these structures are equivalent structures. एक जैसा ही है ना? Is there any difference in the structures? All these structures are equivalent. You are having 2 negative charges and 2 pi bonds. सब में वैसा ही है. Hence the contribution is equal. You are adding all the structures and you are dividing it by 6. But in resonating structure, Sir, we can't hear you. Yes, sir. Sir, you are not audible. it got disconnected. आप लोग कोई बता नहीं रहे मुझे disconnect हुआ है करके. मैं बताते जा रहा हूँ. बताया सर. We will continue from here in the next lecture. अभी इसके इधर से फिर से start करता हूँ. Don't worry, इधर से start करता हूँ.